Hello students. So let's start the basic of grammar on our channel English Anchor. Okay. So we all have learned the alphabets in the very beginning of our education. They were the stepping stones. A, B, C, D, the all 26 alphabets, right? So when we combine these alphabets, we get the words like reading, studying, read, blue, books. These all are words. Now, when some of these words are combined, okay, like in the garden, so such are these are called phrases, okay. They do not contain subject and a verb. Now here you can see in the pyramid the third yellow picture, okay, is a phrase. Example is in the garden, or you can say in the kitchen, on the table, behind the curtains. Now, these are the few words which are combined together, but they are making sense. Okay, you can understand from in the garden, but something is missing. कुछ missing है इसमें. In the garden. अब in the garden क्या, कौन है, क्या चल रहा है garden में, ये सब information missing है. So such things are called phrase. Okay, now we will move up, and above the phrase you find clause. Clause में क्या है? A group of words that contain a subject and a verb. Minded students, it is not a complete sentence, it is a section of a sentence. Okay, it can make sense also. Okay, it is not like a phrase that it is not going to make complete sense. Some of the clause will make complete sentence, like you will feel that they are sentence only, but they are clause because they contain subject and a verb, unlike of a phrase. जैसे phrase में subject और verb नहीं होता, clause में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, तभी वो क्लॉज होता है. लाइक शी इज रीडिंग अ बुक, तो शी क्या है, सब्जेक्ट है. रीडिंग क्या है, एक वर्ब है. सो दिस इज अ क्लॉज. ओके, नाउ we move up the ladder and we get the sentence. Okay, so sentence is she is reading a book in the garden. Now can you understand, from alphabets we got a word reading, then in the garden is a phrase, she is reading a book is a clause, she is reading a book in the garden is a complete sentence that makes sense. You have complete information about the sentence, right? So this is a structure of a complete sentence. Okay, so let's move ahead and discuss phrase once more about it. Now in Army public schools we have a grammar which we use for all three classes, 6, 7, 8. Okay, now Army school students can also use this for reference for their practice. Other students can also use it's a very good informative book. Okay, so but those for your reference I'm telling you that this is from the very first chapter of the grammar. Okay, English grammar and composition for middle classes, classes 6 to 8. Okay, now in this you can see some of the phrases given. 8 phrases are given. How you can change these phrases into sentences, let's discuss this. Now the first is at the right time. Now it is making sense, it is not grammatically wrong, but it is just a part of the sentence. It is a phrase, at the right time. How you can convert it into sentence? Okay, she came to the meeting at the right time. Okay, second is a piece of cheese. This work is a piece of cheese for him. A wonderful story. What a wonderful story it is. Fourth is reading aloud. She is reading aloud. Fifth is tired of listening. Sentence would be, I am tired of listening to your excuses.
Sixth, in a hurry. Sentences, she is always in a hurry. Seventh phrases, in the morning. The sentence we can make out of it is, she came to my home in the morning. Eighth phrases, at the station. Sentences, please meet me at the station. So I hope uh, it is clear to you how we have converted the phrases into sentences. Now let's move ahead to the next topic, which is subject and predicate. Now both these things are part of the sentence. Okay, so now what is a subject? Okay, in every subject these both are needed. Subject and predicate are needed. Okay, subject tells who or what the sentence is about. आप किसके बारे में बात कर रहे हो या आप क्या बात कर रहे हो. इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट यू आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन. आप किसी चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हो, किसी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो. लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इट इज़ नॉट अ पर्सन, तो आप उसे हु नहीं बोलोगे. इट इज़ योर क्वालिटी. सो यू आर टॉकिंग अबाउट, so honesty is the subject here, right? Now I hope you're clear with the subject. Now we'll discuss the predicate. Predicate ये है कि जो subject है वो क्या कर रहा है, ओके, या जो कोई भी चीज़ है वो क्या अपने बारे में बता रही है. ठीक है. द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है या वो क्या है. ओके, नाउ look at the first example on the left side. The girl is dancing. Who is dancing? The girl is dancing. So the girl क्या है? Subject है. But लड़की क्या कर रही है? What the girl is doing? She is dancing. Is dancing is the predicate. तो इस sentence में the girl is subject, is dancing प्रेडिकेट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक एक वर्ड ही होते हैं. वो दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है. उस पर कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. द नेक्स्ट इज द डॉग इज बार्किंग. हु इज़ बार्किंग? तो कौन सब्जेक्ट है यहाँ पर? द डॉग. सिर्फ डॉग नहीं होगा, द डॉग. अब डॉग क्या कर रहा है? वॉट द सब्जेक्ट इज डूइंग? इज बार्किंग. ओके, इज बार्किंग इज द प्रेडिकेट. द स्कूल इज़ बिग. क्या बड़ा है? स्कूल बड़ा है. तो जनरली जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के बीच स्टार्टिंग में आता है, बट हम आगे और भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स अभी डिस्कस करेंगे जिसमें वो बीच में नहीं आएगा. इट वुड कम इन द मिडल और मे बी एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. So now in the center you can see the cat is sleeping. Both subject and predicate are underlined. The cat is the subject. Who or what? Predicate is what doing or what it is. So this slide makes the concept of subject and predicate very clear. Let's move on with some complex examples. See, when you are very small, then maybe such examples can come, but as you grow higher, you have to learn the complex part of it. So let's do this exercise on page 11 of the book. Okay, now some statements are given to you. You have to tell the subject, okay, and the predicate as well. Okay, now the first is close the door. Now understand, आप किसी को close the door कह रहे हो तो उसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आप हो. ओके, बिकॉज आपको वो कह रहा है कि यू क्लोज द डोर. वो आपको एक कमांड दे रहा है, क्लोज द डोर. सो सब्जेक्ट इज व्हाट? यू. ओके, क्लोज नहीं है जो फर्स्ट वर्ड है, या डोर नहीं है. ओके, क्लोज द डोर, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, क्लोज द डोर वुड बी प्रेडिकेट. एंड व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट? यू. वो कोई चौथा ही वर्ड निकला है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. क्योंकि आप किसी को कमांड दे रहे हो, क्लोज द डोर, कम इन द रूम, स्टॉप लाफिंग.
अब इसमें कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं है, बट ये जो पर्सन है वो आपसे बात कर रहा है. सो यू, he is telling you to close the door, he is telling you to shut up, he is telling you to stop laughing. So you are the subject and the predicate is close the door. The next example is there are 10 players on the field. Please understand the statement completely. Like there are 10 players. किन की बात हो रही है? 10 players की बात हो रही है. तो who is the subject? 10 players are the subject. Okay. Now वो क्या, उनके बारे में हम उन 2 प्लेयर्स, उन 10 प्लेयर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं? दैट दे आर ऑन द फील्ड. सो आर ऑन द फील्ड, 10 प्लेयर्स क्या है? सब्जेक्ट है. आर ऑन द फील्ड प्रेडिकेट है. सो ये आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, उस पर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या बात हो रही है, दैट इज द प्रेडिकेट. हु टोल्ड यू दिस? ठीक है, ये किसने बताया? अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? किस? हु. ओके, सब्जेक्ट इज हु एंड प्रेडिकेट इज टोल्ड यू दिस, जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं. नाउ ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट. किसकी बात हो रही है? एक हिल के टॉप पे कौन रहता है? हर्मिट रहता है. सो हर्मिट इज द सब्जेक्ट. अब देखो सब्जेक्ट कैसे फर्स्ट से, बिगिनिंग से लास्ट में चला गया. अब हर्मिट के बारे में हम क्या कह रहे हैं? कि वो हिल के टॉप पे रहता है. तो लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल इज द प्रेडिकेट. फिफ्थ, सडनली वन ऑफ द व्हील ऑफ द कार केम ऑफ. क्या केम ऑफ? क्या हो गया? कार से क्या आ गया? वन ऑफ द व्हील. आप एक व्हील ये नहीं लिखोगे, व्हील्स नहीं लिखोगे, वन ऑफ द व्हील. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? वन ऑफ द व्हील्स. ओके, अब वो वन ऑफ द व्हील्स ने क्या करा? ऐसा क्या करा जो प्रेडिकेट बन गया? केम ऑफ द कार. ओके, केम ऑफ द कार. Sixth, a dark figure appeared in the hallway. We are talking of the dark figure. Okay, so dark figure is the subject. अब dark figure ने क्या करा? वो hallway में दिखी. So that is the predicate, appeared in the hallway. Okay, when did she call? So subject is she. Predicate, उसने, हमने क्या करा? उसने क्या करना था? ओके, व्हेन डिड शी कॉल? उसने कॉल कब करा? तो कब करा? ओके, व्हेन डिड कॉल. ओके, so that is the predicate. Now the eighth one, in the dense forest lived a saint. तो एक घने जंगल में एक साधु संत सेज रहता था. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक सेंट की बात कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट इज द सेंट. अब वो उसकी क्या बात कर रहे हैं? कि वो घने जंगल में रहता था. ओके, ठीक है. सो इन द डेंस लिव्ड इन द डेंस फॉरेस्ट. तो इसको आप थोड़ा सा आप सो दैट इट मेक्स सेंस. अब आप उठाकर इसको ऐसे नहीं लिख दोगे इन द डेंस फॉरेस्ट लिव्ड. द प्रेडिकेट लिव्ड इन अ dense forest. So I hope with the answers more light is being shed on the predicate. Please practice more of such examples so that it is clear to you, and we will discuss the type of sentences in the next video. All right, thank you so much.